webinar will begin shortly. Please remain on the line. Please remain on the line. Please remain on the line. रहीम सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों को आज के इस वेबिनार के ऊपर मैं वेलकम करूंगा। सॉरी आज का वेबिनार 5-7 मिनट लेट हुआ और वो कहते हैं हुई ताखीर भी होगी। तो वजह ताखीर ये थी कि आज हमारे पास एक बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो लियो क्राउड के ऊपर आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। उनको इंट्रोड्यूस तो मैं नहीं करूँगा, मैं एक और शख्सियत को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जो आप सबके और हम सबके ज़बरदस्त किस्म के जो समझें कि भाई हैं और हमारे बड़े काबिल एहतराम हैं और आज का ये ऑर्गेनाइज करने में उनका एक बड़ा रोल था। सो मैं बगैर वक्त ज़ाया किए आज जितने भी दोस्त पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएई से और बहुत सारे कंट्री से दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं उन सबको वेलकम करूँगा और वक्त ज़ाया किए ये हैंडेड ओवर करूँगा और बिलाल GM ब्रदर वकास सोहेल। Thank you very much. Thank you very much, Liaquat. So nice of you. Actually, the credit or organizing of this webinar on your crowd, especially goes to you. मेरा तो सिर्फ एक आइडिया था, but organize करना और लोगों को इस पे लेके आना ये तमाम आपकी जो है वो काविश है। Assalam Alaikum. Hi, hello everyone. This is Waqas Sohail from Dubai. आप लोगों के साथ इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज का ये बड़ा ही स्पेशल वेबिनार हमने एक अरेंज किया है अपने तमाम दोस्तों के लिए। इस वेबिनार को आज सबसे पहले तो बिफोर हम ये शुरू करें उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वेबिनार को आज करने का मकसद क्या था। एक्चुअली मैं जब लंदन में था आज से कोई 1 महीने पहले तो मेरी मुलाकात हुई डेविड जॉनसन से वहाँ पे एंड डेविड ने वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन दी अबाउट लियो क्राउड और जिसको देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ऐसी खूबसूरत चीज़, एक ऐसा नया आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो पूरी दुनिया में बड़ा ग्रो कर रहा है और लियो ने भी उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, लेकिन बेशुमार लोग उसकी जो आने वाला जो कल है उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसमें जो नई चीज़ें आ रही हैं वो उनको पता ही नहीं कि वो हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में ये लियो क्राउड कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा इसके मुतालिक लोग जानते ही नहीं है। तो उस वक्त मैंने डेविड से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो हमारे साथ एक वेबिनार अरेंज करें और जो हमारे दुबई रीजन में जो स्पेशली लोग हैं जिनके पास राइट नॉलेज नहीं है लियो क्राउड के हवाले से, उनको जो है वो सही नॉलेज प्रोवाइड करें और इसकी अपडेट्स दें कि आया हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आगे कहाँ जा रहे हैं और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में हम लियो क्राउड से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं ये भी आज के दिन हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं लियो क्राउड की ये प्रेजेंटेशन शुरू करूं, आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं ऑन सच अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रिगार्डिंग DMS। इस प्रोडक्ट को कामयाब बनाने में और उसकी सेल्स को इतने बेहतर और एहसन तरीके से करने के लिए ऊपर मैं आप तमाम लोगों को इंतहाई मुबारकबाद देता हूं और तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इंतहाई एहसन तरीके से आप लोगों ने इन सेल्स को आगे बढ़ाया है और आई एम रियली फील प्राउड and very happy about this. Thank you very much all of you who ever done their efforts to make these sales successful. So without wasting any minute, I would like to call on the call the one and only, the general manager for Leo Crowd, David Johnson. Hi David. Good afternoon, Waqas. How are you, my friend? I'm good. Thank you very much for coming, David. That's no problem. I am absolutely delighted to join you on the call with so many Leo members from Pakistan, from India, from Oman. It's a pleasure and an honor to join you and support you today. Okay, David, I will translate you as well. David जो है आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान, इंडिया, ओमान और UAE से हमारे साथ हैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। Yes. I know how hard you work, Waqas. I know you're doing an excellent job supporting the members in these regions. So I look forward to spending this call trying to explain more about the exciting project and future of Leo Crowd. Thank you very much. Thank you very much for coming today. So you want me just to keep going? You just jump in to translate when you're ready? Yes, let's start. Okay, good. Okay, so the purpose of the webinar today is to bring all the Leo members
up to date with what's happening with Leo Crowd, but more importantly, to share the future and where Leo Crowd is going. आज के लियो क्राउड की वेबिनार का जो मकसद है वो है कि लियो क्राउड में इस वक्त क्या हो रहा है और आने वाले दिनों में लियो क्राउड कहां पर खड़ा हुआ होगा. Yes. Okay, so if we go on to the next slide, please. Okay, so my own personal background, I have been in the world of marketing, the world of property investment, and also have been involved in network marketing, multi-level marketing for all in all almost 20 years. Wow. डेविड जॉनसन का तारुफ आपसे है कि डेविड जॉनसन जो हैं वो उनका जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग से ज्यादा रहा है. इनका ताल्लुक नेटवर्क मार्केटिंग से भी रहा और थ्रू आउट जो इनका करियर है वो तकरीबन 20 साल के ऊपर मुश्तमिल है. I actually met Dan Anderson back in 1994 at a multi-level marketing retreat for leaders, and that was the first time I heard Dan speak, and we have been friends ever since. डैन से मुलाकात जो डेविड की 1994 में हुई और एक मल्टी लेवल कंपनी की ट्रेनिंग के दौरान जहां पे डैन एंडरसन जो है वो स्पीच दे रहे थे, बात कर रहे थे और वहां से इनकी दोस्ती शुरू हुई और आज तक कायम है. So Dan asked me to launch the Leo Crowd back over 2 years ago now. So let's get right in now and discussing Leo Crowd. आज से 2 साल पहले डैन ने जो है वो डेविड को बुला के उनसे रिक्वेस्ट की कि आए आप हमारे साथ जो है वो लियो क्राउड फंडिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको जो है आप शुरू करें और तब से ये उनके साथ इस पे काम कर रहे हैं. So initially, I want to make sure that everyone on the webinar understands what crowdfunding is, because it's really important we have a proper understanding of exactly what crowdfunding is. आज के वेबिनार में डेविड का जो फोकस होगा वो ये कि आज के दिन जो भी लोग इस वक्त वेबिनार पर मौजूद हैं वो क्राउड फंडिंग है क्या, उसका मकसद क्या, उसके मकासद क्या हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ जाएं. So crowdfunding is simply put a form of alternative financing. क्राउड फंडिंग जो है वो एक ऑल्टरनेट है फाइनेंसिंग के ऊपर कि अगर आप बिजनेस को फाइनेंस करना, दैट्स द चैलेंज. फाइनेंसिंग इज फाइनेंसिंग आई थिंक कि आपने अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, बिजनेस है और उसको अगर आप फंड करना चाहते हैं, उसमें आपको पैसों की जरूरत है तो उसकी फंडिंग में आपको ये एक ऑल्टरनेटिव वे है, एक और तरीका है आपके बिजनेस को फंड करने का. Okay, so it's not magic. It's simply a alternative means of businesses and those who require funds to receive those funds. ये कोई जादू नहीं है कि इसमें खुद ब खुद जो है वो पैसे आपके बिजनेस में कोई लगाने पे आ जाएगा, लेकिन ये एक तरीका है, एक प्रॉपर तरीकेकार है जिसके जरिए जो है वो आप बिजनेस को फाइनेंस करवा सकते हैं. Yes. So on the screen you can see the icon of a project creator. This could be someone who is starting a business. It could be someone who has an existing business but needs money, or it could be someone with a brand new idea. Okay, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक जो है प्रोजेक्ट क्रिएटर का एक वर्ड लिखा हुआ है. ये वो शख्स है जिसने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, कोई बनाया है और इसको आइडिया को लेकर आया है और इसको जो है वो आगे लेके जाना चाहता है. So if someone is in a project creator and they need finance, if you click the next click please. Okay, अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिएटर है जिसने कोई आइडिया लेकर आया है और उसको पैसों की जरूरत है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए. Yes. Okay, so a project creator can come to an online platform and they can introduce them to a crowd or a tribe of backers. So you have two elements. यहाँ पे जब अपना प्रोजेक्ट आप कोई आइडिया होता है उसको आप एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आते हैं और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लोगों का एक ग्रुप होता है, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बैकर्स कहलाते हैं, जो आपके प्रोजेक्ट को बैकअप करते हैं, जो आपके फाइनेंस आपको जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं या फंड कर रहे होते हैं. यस.
Okay, now I'm taking my time on this slide because I think it's so important, Waqas, that the members really understand what Leo Crowd is. परफेक्ट। जॉन कह रहे हैं कि वो इस स्लाइड पे थोड़ा सा टाइम लेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह समझ लें कि ये आइडिया है क्या क्राउड फंडिंग का। यस जॉन। Okay, so if I was to ask, if I was doing a live training, I would ask people, what does eBay sell? I'm sure people understand eBay, Waqas, yeah? Yeah. Yeah, so you can ask the question, what does eBay sell? ओके डेविड कह रहे हैं कि अगर वो लाइव होता है ये सेशन तो इसमें वो सबसे पहले एक सवाल लोगों से करते हैं कि आप बताइए कि ईबे क्या करता है, या ईबे के जैसे प्लेटफॉर्म है इसी तरह एक और प्लेटफॉर्म भी है ओलेक्स जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर। ओलेक्स क्या करता है? यस डेविड। Okay, and when I'm doing a live seminar, some people say eBay sell everything, and some people say eBay sell nothing. And Yes. the last answer is correct. eBay don't sell anything. They Right. bring people who want to sell together with people who want to buy. And that's what crowdfunding does. People want money, and people come willing to pledge money. यस उसका सिंपल सवाल ये है कि ईबे या ओलेक्स ये क्या बेचता है। तो अगर आप लोगों से पूछें कि वो क्या बेचता है तो उसका जो सही जवाब है वो ये है कि ईबे हो या ओलेक्स हो ये कुछ भी नहीं बेचते, ये खुद कुछ नहीं बेचते। हाँ, ये उन लोगों को जो कोई चीज बेचना चाहते हैं या कोई चीज खरीदना चाहते हैं उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे के साथ। यस डेविड। Okay, so if you go on the next slide, please. Okay, so what's really important to understand about the future potential of Leo Crowd is to understand the current industry. And you can see there that the crowdfunding industry grew from 500 million to 34 billion in just 7 years, which is phenomenal. लियो क्राउड को समझने के लिए या उसकी इंपॉर्टेंस या उसकी अहमियत को समझने से पहले के लिए जरूरी, उसकी अहमियत को समझने के लिए जरूरी है कि उस इंडस्ट्री की अहमियत और उस इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस को समझा जाए। अगर आप क्राउड फंडिंग जो कि एक इंडस्ट्री है, अगर इसको आप देखते हैं, इसकी ग्रोथ को आप देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रही है, तो अगर आप देखेंगे पिछले 7 सालों में ये इंडस्ट्री $500 मिलियन से बढ़ के $34 बिलियन की इस वक्त इंडस्ट्री हो चुकी है। यस डेविड। Okay, that is absolutely phenomenal growth of any industry, and it's because of the paradigm shift that came after the credit crunch, when the banks made it harder to lend money. This drove the growth in crowdfunding. या और ये अगर आप इस ग्रोथ को देखते हैं, इसकी जो ये अगर आप इसकी जो मूव देखते हैं कि ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि 500 मिलियन से 34 बिलियन पिछले 7 सालों में, तो ये एक बहुत बड़ी मूव है, एक बहुत बड़ी एक ग्रोथ का एक जैसे बोलना चाहिए कि ये एक स्टेप है, ये एक सीढ़ियां है जो है इस इंडस्ट्री ने तय की है। और ये एक बहुत बड़ा एक नया प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए। वहां पे जहां पे बैंक्स किसी भी बिजनेस को या किसी इंडिविजुअल को, किसी एक शख्स को लोन देते हुए घबराते हैं, वहां पे क्राउड फंडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। यस डेविड। For Leo Crowd to be successful, we don't need to do 34 billion a year. We just need to take a very small proportion of a $34 billion industry, and we are very successful. लियो क्राउड फंडिंग को कामयाब बनाने के लिए हमको 34 बिलियन की जरूरत नहीं है, हमें उसका एक बहुत ही छोटा, बहुत ही मामूली छोटा सा हिस्सा जो है वो चाहिए होगा अपनी लियो क्राउड के प्लेटफॉर्म को कामयाब बनाने के लिए। यस। Okay, so next slide then. So now we're going to just talk very briefly about a very important part of crowdfunding, and that is there are different models. इस स्लाइड के ऊपर हम जो बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ये चीज समझाएगी कि क्राउड फंडिंग काम कैसे करती है और वो एक्चुअली है क्या। यस। Okay, so you can see the 4 main models
If we start on the right-hand side of the screen, you'll see equity in the green circle and lending in the pink circle. Okay, अगर आप इस स्लाइड के ऊपर सीधे हाथ पे देखें तो यहाँ पे 4 आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो फंडिंग के मॉडल्स में आती हैं, क्राउड फंडिंग के मॉडल में आती हैं। उनमें सबसे पहले अगर आप सीधे हाथ पे देखेंगे तो इक्विटी का पार्ट है, राइट, और दूसरा पिंक कलर में लेंडिंग का पार्ट है। So the equity and lending, लेंडिंग का मतलब है उधार, कर्ज देना। जी, yes. So the equity and lending crowdfunding models are regulated companies. You have to have a license because you are taking investment into those models. Okay. अब वो चाहे इक्विटी का मॉडल हो जिसमें आप कंपनी के शेयर्स जो हैं वो फंड्स के अगेंस्ट में एक्सचेंज कर रहे हो, या वो कर्ज लेने का मॉडल हो, ये दोनों जो मॉडल हैं ये दोनों के दोनों लीगल ऐसे मॉडल्स हैं जिनके लिए आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड होना जरूरी है, क्योंकि ये वो मॉडल है जो कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट का जो एक आंसर है वो आता है। Yes. Okay, so on the other side of the red line you can see charity and rewards, and Leo Crowd is a reward company. So we do not take investment, we simply take pledges of funds in exchange for rewards. ओके, राइट हैंड अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे इस रेड लाइन के तो वहां पे दो चीजें लिखी हुई हैं, एक है चैरिटी और दूसरा है रिवॉर्ड्स। लियो क्राउड जो है वो रिवॉर्ड्स के ऊपर बेस करती हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो रिवॉर्ड्स के बेस के ऊपर आपसे फंड्स एक्सचेंज करती है। फंड्स मीन जो लोग आपके पैसे देते हैं उनके एक्सचेंज में उनको कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ओके, Okay, so I want to really emphasize, because people often get confused and think that we're looking for investors for Leo Crowd, but we're not wanting investors, we're wanting people to pledge in exchange for a reward, because we are not a licensed, regulated company that deals in equity and lending. Yeah. यहाँ पे एक चीज बहुत अहम है समझने की, वो ये कि लियो क्राउड जो है वो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं होते। यहाँ पे क्योंकि जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, इक्विटी की और लेंडिंग की आती है, तो वो एक पूरा अलग सेक्टर है बिजनेस का काम करने का, जिसके लिए अलग रेगुलेशंस हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। तो लियो क्राउड के अंदर जो है वो ज्यादातर लोग अपने जो पैसे हैं वो प्लेज करते हैं, यानी कि वो इस बात पे किसी और को देते हैं कि उसके बदले में उनको कोई रिवॉर्ड्स मिलेंगे, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो क्या रिवॉर्ड दे रहा है, ये आगे चल के हम देखेंगे। यस। Okay, so next slide please. We're going to look at some examples of phenomenal success stories using reward-based crowdfunding, and one of the biggest companies out there is called Kickstarter. इस स्लाइड के ऊपर आप देखेंगे कि क्राउड फंडिंग की जो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ सक्सेस स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ऐसी कंपनीज, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जो प्लेज ओरिएंटेड, जहां पे लोगों ने अपने पैसा प्लेज किया रिवॉर्ड्स की बेस पे, उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्या सक्सेस हुई, आइए वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और उसमें जो पहली कंपनी है वो है kickstarter.com। ये 2009 में फाउंड हुई। यस डेविड। Okay, so you can see that Kickstarter are the largest reward-based company in the world. They're only 8 years old, and yet they have over 100,000 projects funded, raised over 2 billion. They've had 11 million people back projects, and you can see two examples of projects that raised the watches 20 million, and Oculus Rift raised 2.4 million. So these are massive raises, and if Leo Crowd grow to be successful, this is the type of project that Leo Crowd can do in the future. यहाँ पे आप इस कंपनी की एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2009 में, आज से 8 साल पहले जो है वो बनाई गई। 1 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, इसको ये फंड कर चुकी है, और इसका जो टोटल अब तक जो इसने पैसे रेज किए लोगों के लिए जो दिए वो तकरीबन 2 बिलियन से ज्यादा ये देख चुके हैं। और इनमें जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो है पेबल वॉचेस का, जिसको $20 मिलियन की इन्होंने जो है वो फंडिंग की, और उसके बाद दूसरा जो है वो ऑकुलस रिफ्ट के नाम से कंपनी है जिसको $2.4 मिलियन की
जो है वो फंडिंग हुई तकरीबन 9,500 बैकर्स की हेल्प से. यस डेविड. Okay, next slide, please. So here's just another company, which is one of the big companies in the world, called Indiegogo. And again, you can see, again, fantastic figures, massive raises, and this is how big Leo Crowd can grow to. I'm a firm believer in business that if someone else has done something, well, then you can also achieve that. And Leo Crowd's future potential is that we can be as big as these companies. ट्रू. जैसा कि ये दूसरी कंपनी आपके सामने है और इस कंपनी का नाम है इंडीगोगो और ये जो है 2008 में बनी और ये तकरीबन 2 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को फंड कर चुकी है और 15 मिलियन से ज्यादा लोग इसकी साइट को विजिट करते हैं और ये एक और बहुत बड़ी कामयाबी है क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री के हवाले से जो आप देख सकते हैं. और डेविड ये कह रहे हैं कि हम लोगों का ये बिलीव है, हमारा ये मानना है कि अगर ये कंपनीज कामयाब हो सकती हैं और इतना बड़ा बिजनेस कर सकती हैं तो लियो क्राउड भी डेफिनेटली इससे बड़ा बिजनेस कर सकती है क्योंकि लियो क्राउड जो है वो कम्युनिटी बेस्ड एक क्राउड फंडिंग कंपनी है. यस डेविड. Okay, next slide then. Okay, so I know this is a little bit heavy, but I'm trying to give really good solid information that you can see the real potential of Leo Crowd in the future. ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए थोड़ी सी टेकी होगा, ये टेक्निकल थोड़ी सी स्लाइड है, लेकिन ये आप लोगों को ये समझाने के लिए ज़रूरी है कि क्राउड फंडिंग की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कैसे कर रही है, वो आगे कैसे बढ़ रही है. यस डेविड. So this is one of the most important slides for Leo members to really get excited about, because you can see the different sectors within crowdfunding. So music and arts and real estate and social causes, etc. However, the biggest sector by far is entrepreneurs and startup businesses. So ये स्लाइड जो है वो कह रहे हैं कि ये स्लाइड जो है वो लियो के जो मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत ही एक्साइटमेंट का बाइस बनेगी कि इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा एक चंक है कि इसमें मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं बिजनेस के जो आप देख सकते हैं. वो म्यूजिक, रिकॉर्डिंग, आर्ट्स है, रियल स्टेट से रिलेटेड है, फिल्म एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, सोशल कॉजेस के ऊपर है. लेकिन सबसे बड़ा जो पाए है, सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो अगर क्राउड फंडिंग से किसी से ने फायदा उठाया है तो वो है बिजनेसेस, नए जो बिजनेस शुरू हुए या वो एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने नए बिजनेस को शुरू किया, उसका जो है उससे सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों ने जो है वो क्राउड फंडिंग से उठाया है. यस. So this fits in perfectly with what Leo is all about. As Leo members, you're helping entrepreneurs, you're unleashing human potential. We're helping people to learn, earn, own. Well, once we have successfully done that, these entrepreneurs need funding. They need people to back their idea to get it off the ground, and crowdfunding can provide the fund. ये हमारी जो कंपनी है उसका जो मंत्रा है उसको पूरी तरह से उजागर करती है कि ये देखिए कि यही वो चीज है जो हम मार्केट में लेके जा रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, लियो का जो सोच है, जो पैगाम है वो क्या है, लर्न, अर्न, ओन. और हम हेल्प किसको करना चाहते हैं, उन लोगों को जो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के हैं, जो अपना खुद कुछ करना चाहते हैं, हम उनको हेल्प करना चाहते हैं. तो यहाँ पे अगर आप ये देखें कि क्राउड फंडिंग जो लियो ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, ये पूरी तरह लियो की जो सोच है, जो साइकी है, जो मंत्रा है, उसको लेके आगे बढ़ता है. और यहीं पे हम ऐसे वो तमाम लोग जो कि नए एंटरप्रेन्योर हैं या अपना कोई काम करना शुरू कर चाहते हैं, उनको हम अपने इस प्लेटफॉर्म से हेल्प कर सकेंगे आने वाले कल. यस डेविड. Okay, so next slide. Let's just look for a second on this entrepreneurial sector, because that's what Leo is all about. It's about helping entrepreneurs. So when you analyze what holds people back from being an entrepreneur, and you can also ask. Yes, please. You continue first.
Okay, you got the second question. Why do so many businesses fail within the first couple of years? They're two important questions. या अगर आप ये देखें कि जो एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है, जो एक रूह है एंटरप्रेन्योर्स की, उसको अगर हम देखें और उसको के लिए जो सबसे पहले दो सवाल हमारे सामने आते हैं वो ये कि सबसे पहले अगर किसी शख्स के पास कोई बिजनेस आइडिया है तो वो क्या चीज होती है जो उस बिजनेस को या उस आइडिया को स्टार्ट करने से रोक रही होती है, नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरा सवाल है वो ये कि पहले चंद एक साल के अंदर क्यों लोगों के कारोबार जो है वो खत्म हो जाते हैं, मतलब वो बिजनेस शुरू हुआ और साल दो साल के अंदर खत्म हो गया, वो क्या वजह होती है कि ज्यादातर लोगों के बिजनेस साल दो साल से ज्यादा नहीं चल पाते? यस डेविड। Okay, and the answers to those two questions on the next click are without doubt the two main reasons why businesses fail and why a lot of people don't even get started in business is lack of money and lack of skills. And Right. Leo and Leo Crowd can answer both of those. Leo can teach the skills and Leo Crowd can provide the finance. ब्यूटीफुल। इन दोनों सवालों का जो जवाब है वो इस क्लिक के ऊपर था कि पहला जो जवाब है वो ये है कि लैक ऑफ मनी, लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो उसको स्टार्ट कर सकें, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह होती है जो पहले चंद साल में बिजनेस खत्म हो जाता है वो लैक ऑफ स्किल्स होती हैं कि आपके पास वो सलाहियतें नहीं होती जिनसे आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। और लियो जो है ये आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि जो पैसे हैं वो आप ले सकते हैं क्राउड फंडिंग के थ्रू, और लियो की जो ई लर्निंग जो कोर प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू आप वो स्किल्स सीख सकते हैं जिनसे आप बिजनेस को आगे बढ़ाएं। Yes, David. Okay, so next slide then just brings this together on the Leo ecosystem where we've got a number of different companies that are interdependent and inter-reliant on each other, and Leo Crowd is very much the oil in the machine, because if we create entrepreneurs, we teach them skills, we want them to earn income, well then they're going to need in many cases funding for their business or project. इस स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि लियो क्राउड का जो हिस्सा है हमारे जो ग्लोबल इकोसिस्टम के अंदर वो क्या है, और हमारा अगर आप इस पूरे इकोसिस्टम को देखें तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्ट हैं, और जो लियो की जो असल रूह है उसको जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं कि आया कि हम किस तरह से जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। Okay, so if you go to the next slide then. Yeah. So within this world of crowdfunding, we have so many different thousands and thousands of companies in crowdfunding. It's a huge industry. So what makes us different than the other companies out there? That's an important thing to know. And there are three. खूबसूरत सवाल है यहाँ पे, ये एक बड़ा खूबसूरत सवाल है जो कि देवर ने यहाँ पे मेंशन किया अपनी स्लाइड के अंदर कि इस वक्त जो क्राउड फंडिंग की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बेशुमार कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं। कई 100 कंपनियां जो हैं इस वक्त, और के शायद ओवर 1000 से ज्यादा कंपनियां जो हैं वो इस वक्त जो है वो क्राउड फंडिंग के ऊपर काम कर रही हैं। लेकिन लियो क्राउड में वो क्या खास बात है जो उसको मुख्तलिफ करती है उन तमाम कंपनीज से? यस डेविड। Okay, so the three main ways are, number one, we have a global footprint through our Leo members. So we can launch a project that goes to all over the world. 300,000 members receive emails, and it's a massive global footprint that other companies don't have. Beautiful. उसमें सबसे पहली जो बात है वो है हमारा ग्लोबल फुटप्रिंट। ये हमारे जो लियो जो कंपनी की जो प्रेजेंस है, जो मौजूदगी है वो पूरी दुनिया के अंदर है, और तकरीबन 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मौजूद हैं जो लियो को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब आप कोई प्रोजेक्ट लियो क्राउड के पॉइंट है हमें जो दूसरों से मुख्तलिफ करता है वो ये है कि हम सिर्फ लियो क्राउड के ऊपर जो है वो सिर्फ प्रोजेक्ट को ही प्लेस नहीं करते, बल्कि उसके साथ साथ हम क्राउड फंडिंग के ऊपर पूरी ट्रेनिंग करते हैं। किसी भी नए एंटरप्रेन्योर की जो अपना आइडिया लेके आता है उसको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से वो अपने आइडिया को जो है वो मार्केट कर सकता है, और इससे रिलेटेड हमारे पास कंप्लीट कोर्सेज हैं और पूरे पैकेज है जो हम लोगों को दे रहे होते हैं। यस डेविड।
Yes, and the third one, which is very, very exciting, is digital currency, because there are a few companies out there, but not many in crowdfunding world, that will accept digital currency as a payment method. So we accept Bitcoin, but we also, of course, accept Leo coin. So this is a way that Leo coin can be used to transact and pledge, and that, of course, helps the price and value of Leo coin. Okay, तीसरा और सबसे अहम जो पॉइंट है वो है डिजिटल करेंसीज का, कि बहुत ही कम ऐसी कंपनीज हैं क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री के अंदर जो डिजिटल करेंसीज को एक्सेप्ट करती हों, और उनमें लियो जो है वो लियो क्राउड जो है वो स्टैंड आउट करती है कि वो ना सिर्फ जो है वो बिटकॉइन बल्कि लियो कॉइन भी एक्सेप्ट करती है जब कोई मेंबर या कोई शख्स जो है वो अपने फंड्स को प्लेज करता है किसी प्रोजेक्ट के लिए. यस डेविड. Okay, so there are the three things. So just very, very quickly on this slide, this is the journey of Leo Crowd so far. So for any new members here on the call who've joined Leo recently, just to see where Leo Crowd has come from and what we've even achieved just in really only 16, 17 months. ये आप स्लाइड देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे वो लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली लियो को ज्वाइन किया है और उनके पास लियो क्राउड से मुतालिक जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए स्लाइड बहुत ही इंफॉर्मेटिव है कि इसमें आप देख सकते हैं कि लियो जो है लियो क्राउड कैसे स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद आज उसकी क्या पोजीशन है. और इसको मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा थोड़ा सा कि अभी तो हमने वो कहते हैं ना सरफेस को स्क्रैच भी नहीं किया. तो यहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं. Yes, David. Okay, so you can see when we started off in mid 2015, right through to now, we have over 5,000 users on the platform, and we've had 30 projects successfully funded. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो आइडिया है ये आया था उस वक्त 2015 के अंदर, सॉफ्ट लॉन्च हुआ 2016 में, और अक्टूबर 2017 तक तकरीबन 5,000 से ज्यादा यूजर्स इस वक्त क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, और उसके साथ साथ तकरीबन 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ लियो क्राउड के थ्रू फंड किए जा चुके हैं. Yes, David. Okay. Put their projects off the ground. So we are very proud that Leo Crowd has helped these people. ये चंद एक प्रोजेक्ट्स आपके सामने स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जो कि लियो क्राउड के ऊपर हमारे पास आए, उनको जो है वहाँ पे प्लेजर्स आए और लोगों ने इनको जो है वो फंड किया, और बहुत ही कामयाबी के साथ जो है ये तमाम कंपनीज को 100% जो है वो फंडिंग मिली. और डेफिनेटली लियो के मेंबर्स के लिए और लियो एज अ कंपनी के लिए और लियो क्राउड की जो टीम है उनके लिए एक बहुत फख्र की बात है. यस. Okay, now many of these were under £10,000, not the millions that Kickstarter go, but it takes time to build up reputation and build up structure. इनमें से बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो £10,000 से नीचे के हैं, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं उसमें ये चीज ऐड करूंगा कि ये बहुत ही कामयाबी की बात है किसी भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जो अभी शुरू हुआ हो कि उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स को कामयाबी से फंड किया है. Yes, David. Okay. So the next slide indicates, I want to emphasize that we have taken time to build the foundations, because you have to have foundations if you want to build a skyscraper. Very true. ये स्लाइड बड़ी खूबसूरत है और मैं इस बात से बहुत हद तक एग्री करता हूँ कि किसी भी जो फाउंडेशन वर्क होता है वो नॉर्मली लोगों को नजर नहीं आता, कि जो है वो जो जब फाउंडेशन किसी भी कारोबार की किसी भी चीज की जब बुनियाद खड़ी की जा रही होती है तो लोगों को लग रहा होता है कि ये तो ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी बुलंद बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए उसकी जो बुनियाद है वो बेहद गहरी खोदनी पड़ती है, और वो जब काम हो रहा होता है तो उस वक्त लोगों को लग रहा होता है कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज वेरी ट्रू कि यहाँ पे इन्होंने कहा कि इस वक्त जो हमारा काम हो रहा है वो इस वक्त है कि सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि हम जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर रहे हैं क्राउड फंडिंग प्रोजेक्ट के लिए. Yes, David. Okay, so next slide then. What is the future of Leo Crowd?
That's a question it's a very good question, and it's one that I'm very excited by because of the potential. You can see Indiegogo, Kickstarter, they are massive skyscrapers. The crowd is now just coming out of the ground, but we can grow potentially as big as these companies. Very true. ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये उस सवाल के जवाब में है कि जो हम अक्सर कहते हैं कि जी आया लियो क्राउड का फ्यूचर क्या है और हम किस तरफ जा रहे हैं, कुछ होगा भी कि नहीं होगा। जो बड़ा एक सीधी अगर मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट का कुछ होगा भी कि नहीं होगा, तो ये आप देख सकते हैं अगर आप ये मिसालें आपके सामने हैं, कंपैरिजन आपके सामने है कि किकस्टार्टर और इंडिगोगो जो है ये बहुत बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर्स हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं, और जो लियो क्राउड है वो मार्केट के अंदर अपने आप को अभी लेके आ रहा है। और डेफिनेटली जब मार्केट होती है जहां पे पोटेंशियल होता है वहीं पे ग्रोथ होती है। पोटेंशियल आप देख सकते हैं, ग्रोथ आप खुद कैलकुलेट करें कि आने वाले दिनों में हम कहां पे खड़े हुए होंगे, क्योंकि हम में और इन सब में जो फर्क है, मैं इनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा, हम में और इन सब में जो फर्क है वो ये है कि हम कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिगोगो या किक स्टार्टर कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, राइट? So yes, David. Okay, so the next part is a little bit of training on what I call the key elements of doing a campaign. I think it's very useful for members to understand what you need to have in a campaign. But if there are any questions on what we've talked about so far, Waqas, maybe now is a good time to take one or two questions before moving on, or are you happy just to move on? I think we should move on because we have over 500 people on board. Okay. So even, is there anything you want to clarify, even that you any questions on that part? So far, it's very good. I think we'll keep forward, and in the end, we will go through with the questions area, and we'll try to answer some questions over there. Perfect. Yes. Perfect. Okay. So you can just explain to the members. It's a little shift now in the presentation. I'm now speaking to people as if they are potential project creators, just so they understand what they should be looking for in potential projects. Okay, beautiful. यहाँ पे डेविड ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, वो कह रहे हैं कि ये जो अब हिस्सा जो है वो प्रेजेंटेशन का शुरू होने लगा है, इस हिस्से में अब वो ये चाह रहे हैं कि आप तमाम लोग अपने आप को ये समझें कि आप लोग जो हैं वो एक पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर हैं जो अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो वो क्या चीजें हैं, वो क्या स्टेप्स हैं जो आपको सीखने चाहिए। तो ये जो है मोर टुवर्ड्स ट्रेनिंग अब हम जा रहे हैं। Yes, David. Okay, so please listen carefully to the next 4 or 5 minutes, because these are 4 pillars that you have to have in a campaign if it's going to be successful. Beautiful. यहाँ पे डेविड ने बड़ा कहा है कि आप प्लीज बहुत ज्यादा फोकस करें अगले 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए, और ये जो बात वो करने जा रहे हैं इसको इंतहाई गौर से सुने, क्योंकि यही वो 4 पिलर्स हैं जो किसी भी आइडिया को कामयाब बनाते हैं। Yes, David. So if we have a table has 4 legs. What happens if one leg breaks? The whole table falls. And True. It's the same in crowdfunding. These are 4 legs of a table that must be there to be successful. Very true. यहाँ पे उन्होंने बात की है कि एक कोई भी अगर आप टेबल हो तो हर टेबल को खड़े होने के लिए कम से कम 4 पिलर्स, 4 पायों की जरूरत होती है, और उनमें से अगर एक पाया भी अगर आप निकाल दें तो वो टेबल खड़ा नहीं रह सकता। इसी तरह क्राउड फंडिंग के लिए ये जो 4 पिलर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 4 पिलर्स हैं जिनमें से अगर आप एक भी अगर हटा देंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टैंड नहीं करेगा। Yes, David. So you have to have a good idea, you have to build the campaign, you have to shout out your campaign, then you launch your campaign. They're the 4 pillars of a crowdfunding campaign. Right. सबसे पहले क्या है कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत आइडिया होना चाहिए जो आपके पास हो, और उसके ऊपर आप एक भरपूर मेहनत करके एक अच्छी कैंपेन बिल्ड करें, और जब वो कैंपेन डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रॉपर हो और वो कैंपेन बिल्ड हो, और जब वो कैंपेन आपकी बिल्ड हो जाए तो उसको पूरे भरपूर तरीके से उसका शाउट आउट करें, लोगों तक उसको पहुंचाना है। वो कैसे पहुंचाना है ये हम डिस्कस करेंगे, और जब ये आप लोगों तक पहुंचाएंगे, उसको शाउट आउट करेंगे, उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे फाइनली। यस डेविड। Okay, so number 1, idea.
सबसे पहले आइडिया. Okay, next slide. Sorry, next slide. Okay. So there you are. So idea. So just hitting a few bullet points, not every single line. You have to have an idea that you're passionate about, but you have to be able to get other people to be passionate about the project as well. आइडिया के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आइडिया आपका ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप तो बहुत पैशनेट या एक्साइटेड हो, लेकिन उसके साथ वो इतना खूबसूरत होना चाहिए कि जब आप वो आइडिया किसी के सामने रखें, जब आप वो किसी को सुनाएं, तो वो भी उसको सुन के उतना ही एक्साइटेड और पैशनेट फील करे. यस. You have to be able to inspire a crowd of people in different countries around the world to be passionate about your project. आप जो है आपका आइडिया में इतना दम होना चाहिए कि वो ग्रुप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सके, उनको जो है वो मुतासिर कर सके कि वो उसको देख के मुतासिर हों और उसकी तरफ तवज्जो दें, रजू करें. यस. Okay, the sweet spot, if I translate okay, the sweet spot of crowdfunding is something that is ubiquity and also new. What I mean is ubiquity means it's common, it's every day, everyone knows what it is. But if you can introduce something new to it, you have a really good possible campaign. Can you explain it again, please? Yeah, okay. So there are two different words actually. Yeah, the word ubiquity really means commonplace. So a mobile phone would be ubiquity. A car, a cup. But if you can introduce something new to that product, so say you have a new phone screen or a new phone case or a new phone edition, it's something that everyone knows about, but you're making a new improvement to it. That is really, really hot for crowdfunding. Yeah, beautiful. बहुत खूबसूरत पॉइंट यहाँ पे डेविड ने दिया है. बहुत ही काम की बात उन्होंने बताई है कि वो ऐसे तमाम एंटरप्रेन्योर्स जो ये कोई समझते हैं कि वो कोई आइडिया सोच सकते हैं या वो कुछ आइडिया सोच रहे हैं, उनके आइडिया के क्लिक होने का या उसके लिए दूसरे लोग एक्साइटेड हो जाए, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके अगर आइडिया में ये दो चीजें मौजूद हैं, ubiquity एंड वो न्यू. ये क्या चीज है? ubiquity मीन्स कि ऐसी चीज जो लोगों के लिए नई ना हो, मतलब वो रोजमर्रा की चीज हो. लेट्स सपोज उन्होंने मिसाल दी कि अगर मोबाइल फोन है तो मोबाइल फोन आज हर एक के पास है, लेकिन उस मोबाइल फोन के अंदर कुछ नया क्या हो, वो कोई जिद्दत कोई ऐसी आप लेकर आए जो दूसरों से आपको मुख्तलिफ करे एक ऐसी चीज के लिए जो रोजमर्रा की चीज है. तो ये दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, क्रिएटिविटी. इसी को कहते हैं कि आप अपने रोजमर्रा की चीज में कोई ऐसी जिद्दत, कोई ऐसी नई चीज लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं जिसको देख के वाव इफेक्ट आए, जिसको लोग देख के एक्साइटेड फील करें, जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हों. This is something extraordinary. Wow, David, well done, man. So if you take the example I gave earlier in Kickstarters, there was a watch that raised $20 million because everyone knows what a watch is. But if you can do something different or new, innovative with a watch, people are excited by that. इसकी मिसाल ये उन्होंने कहा कि किकस्टार्टर में जो 20 बिलियन जो है वो वॉच कंपनी ने जो रेस की अपने लिए, उसमें क्या था कि वो वॉच थी. वॉच हर एक जानता है कि घड़ी क्या काम करती है, लेकिन उस घड़ी में नई चीज क्या ऐड की, दैट बेसिकली हेल्प्स देम टू रेज दैट काइंड ऑफ मनी. जी सर. Yeah. Okay, so next pillar is build. So we've talked about the idea. The next one is build. And again, too many people don't take time. दूसरा जो सबसे बड़ा पिलर है वो है बिल्ड का, कि हमने जो है अपना जो आइडिया है उसको बिल्ड कैसे करना है. यस. So too many people don't take time to prepare a proper campaign pitch. Too many people, sorry? Too many people do not take enough time to prepare a proper crowdfunding pitch. Okay. बहुत से लोग जो हैं वो क्राउड फंडिंग पिच जो बनती है, जो क्राउड फंडिंग के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो उन तक पहुंचने के लिए, उन तक अपना आइडिया पहुंचाने के लिए जो पिच क्रिएट करनी होती है, बेशुमार लोग वो पिच बनाने में नाकाम रहते हैं.
उन तक वो बात पहुंचाने में नाकाम रहते हैं कि कैसे वो बात पहुंचाई जाए. So when I say pitch, I should have explained this is the part that people I already see on the explained. platform. Yeah, okay, yeah, I already right. explained. Okay, so you have to plan your campaign strategy. You have to be clear as to what your rewards are. You've got to be clear as to what the money's been used for, and you have to create a very good crowdfunding video. Okay, number one, you need to plan your strategy, right? Yes. ओके सबसे पहले जो है आपको जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी है आपके प्रोजेक्ट की वो बड़ी क्लियर बनानी होती है कि आप किस स्ट्रैटेजी पे इसको लेके चलेंगे. उसके बाद जो दूसरी अहम चीज है कि वो रिवॉर्ड क्या होगा कि अगर कोई शख्स आपके पास अपने फंड्स को प्लेज करेगा, अपने पैसे प्लेज करेगा आपके पास, तो आप उसको रिवॉर्ड क्या करेंगे. थर्ड थिंग, कैन यू रिपीट प्लीज. Yes, you have to explain what the money is going to be used for. थर्ड थिंग जो है वो ये है कि आप वो जो पैसे आपके पास दे रहे हैं वो पैसे किस चीज में यूज होंगे. ये लोगों को पता होना चाहिए कि वो अपने पैसे जो प्लेज कर रहे हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो आप उन पैसों का करेंगे क्या. यस. Okay, and then there's the video. The crowdfunding video is very, very important. और जो चौथी चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्राउड फंडिंग वीडियो. जो आप अपनी वीडियो लोगों तक पहुंचाएंगे वो बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Yes. Okay, number three, I'm conscious of time. Time's marching on. So number three, you've had your idea, you've built your campaign. You cannot launch the campaign until you have a pre-launch shout out. You have to tell people that the campaign is coming. Shout out जो है वो it's an amazing part actually. Which normally people, क्योंकि I've come across with a lot of actually entrepreneurs. I meet them in universities and all that. So actually this is a very important point. ये बहुत खूबसूरत और बड़ा अहम point है जो डेविड ने यहाँ पे मेंशन किया है. वो ये है कि आपकी जो कैंपेन है वो प्री लॉन्च से पहले लोगों तक बताना कि कोई कैंपेन आने वाली है. उसकी पहले से एक ऐसी एक वॉइस क्रिएट करना, एक नॉइज क्रिएट करना लोगों तक कि लोगों को पता चले कि कुछ आने वाला है. अक्सरियत जो लोग हैं, और ये मैं बिल्कुल इस बात से 100 गुना जो है वो 100% जो है मैं उसे एग्री करूंगा इस बात से कि बेशुमार लोग अपनी कैंपेन इस वजह से सक्सेसफुल नहीं कर पाते. उसकी वजह ये होती है कि जो उसका शाउट आउट होता है बिफोर लॉन्चिंग, लोगों को पता ही नहीं होता कि कुछ आने वाला भी है. तो यहाँ पे जो उन्होंने चीज मेंशन की है, डेविड यू कैरी ऑन. Yep, I liken it sometimes to multi-level network marketing, where there's an event and you speak to someone and say, "Do you have any guests here tonight?" And they say no. And then you say, "Well, how many did you invite?" "Well, nobody." "Well, if you don't invite anybody, who's going to come?" Right. मल्टी लेवल में जो है वो एक सबसे खूबसूरत बात जो है वो अक्सर अगर आप किसी से पूछें कि आज आपका कोई गेस्ट है तो वो कहता है नहीं है. तो आपसे पूछें क्या आपने किसी को इनवाइट किया था, बोलेगा नहीं किया था. तो ये बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि जब आप किसी को इनवाइट ही नहीं करेंगे तो कोई गेस्ट आएगा कैसे आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर. यस. So people around the world are not telepathic. They don't know about your project unless you tell them about it. True. So बड़ी खूबसूरत बात कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो टेलीपैथी नहीं जानते. वो उनको खुद ब खुद इल्हाम नहीं हो जाएगा कि आप कोई प्रोजेक्ट जो है वो लेकर आने वाले हैं और वो खुद ब खुद जो है वो आपके प्रोजेक्ट पेज पर पहुंच जाएंगे. तो आपको एक शाउट आउट करना पड़ता है, एक शाउट आउट क्रिएट करना पड़ता है कि आप कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं. यस डेविड. Yeah, we have people who put projects on our platform and then go live and then contact us and say no one has backed my project, and they don't have any shout out, there's no social media, there's no Facebook, there's no Instagram, they haven't told anybody about the campaign, and they think somehow magically money is going to appear on their account. It doesn't happen. Very true. और ऐसा अक्सर होता है कि लोग जो है क्राउड फंडिंग की किसी भी वेबसाइट के ऊपर अपना प्रोजेक्ट डाल के वो इंतजार करने लगते हैं कि अब खुद ब खुद कोई जादू हो जाएगा और लोग जो है वो उसके ऊपर आएंगे और उसके जो है प्रोजेक्ट को फंड करना शुरू कर देंगे. वो कोई शाउट आउट कैंपेन नहीं डिजाइन करते, वो कोई उनकी प्री लॉन्च कैंपेन नहीं होती, कोई शाउट आउट नहीं होता, कोई फेसबुक के ऊपर एक्टिविटी, लिंक्डइन, किसी चीज, किसी सोशल मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं करते और वो समझते हैं कि वो कोई जादू होगा
और खुद ब खुद जो है वो लोग जो है वो इनको प्लेज करने आ जाएंगे फंड्स को. Yes, David. Yeah, and sometimes it might be 2 or even 3 months of a shout out campaign before you go live. Wow. Wow. And that is a recommendation, और ये बड़े एक टिप है इसकी कि आपको कम से कम 2 से 3 महीने पहले से जो है वो अपनी शाउट आउट जो कैंपेन है वो शुरू कर देनी चाहिए. लॉन्च से पहले, कैंपेन लॉन्च करने से पहले आपको अपना शाउट आउट जो कैंपेन है वो 2 से 3 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कुछ आने वाला है आपके पास से. Yes, David. Okay, and the last one then is launch. So when you've got a good idea, you've built your pitch, you've done your shout out, then you launch. That's the exciting time. It's the rocket launch. When you're sending a rocket to the moon, you don't just turn up the first day, jump in your rocket and fly to the moon. There's a long process of building the rocket, preparing the rocket, and eventually you do a takeoff. True, true. It's very good कि आप जो है वो जब लॉन्च का जब पार्ट आता है वो सबसे एंड में आता है, कि जब आप जो है वो अपने आइडिया को भरपूर तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर चुके होते हैं, उसको जो है पूरे तरीके से वाटर टाइट कर चुके होते हैं, उसकी जो आपने जो शाउट आउट कैंपेन है वो भरपूर तरीके से की होती है. जब ये तमाम चीजें आप कर लेते हैं, उसके बाद वो वक्त आता है जब आप अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं. और इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप कोई रॉकेट आपने लॉन्च करना होता है खला में भेजने के लिए, तो वो ऐसा नहीं होता कि बस रॉकेट बन गया और वो लॉन्च हो गया और वो चला गया 24 घंटे के अंदर अंदर. उसको बनाने में, उसको तैयार करने में टाइम लगता है, उसके लिए पूरी तैयारी की जाती है, उसके जो सारी चीजों को पढ़ा जाता है, देखा जाता है, उसके बाद जाके उस रॉकेट को लॉन्च, सक्सेसफुल लॉन्च किया जाता है. Okay, yes, next slide, please. So this is the normal pledging activity, and again, it's important to follow and understand this, because initially, when you launch your project initially, the first pledges come from people that you know, your warm market, those that you have built up during your pre-launch shout out, and you need 20 to 30% of your target to come in the first week. True. इसमें जो प्लज कर्व है कि किसी भी प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल प्लेजेस जो होते हैं उसका प्रोसेस क्या है, वो किस कर्व से गुजरते हैं. उसमें जो सबसे पहले होता है वो ये होता है कि आपकी एक वार्म मार्केट होती है, जिनको आपने जो प्री लॉन्च शाउट आउट था उसके अंदर आपने अपने साथ उनको एंगेज किया था. और ये वो लोग होते हैं जो आपके साथ एंगेज होते हैं, आपके आइडिया को पसंद करते हैं, आपके साथ ऑन बोर्ड होते हैं. और जब आप अपना लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट, तो 20 से 30% जो आपके प्लेजेस हैं वो इन्हीं लोगों से पूरे हो जाते हैं. Yes, David. So during the middle of the campaign, so say it's a 30-day campaign. Week 2, week 3, the pledges might slow down, and there won't be as many. But then at the end is when the crowdfunding kicks in, and people who don't know you will come on and pledge because they can see that your campaign may be successful. Yeah. और ये जो कर्व है इसमें जो अगर लेट्स सपोज अगर ये 30 दिन की कैंपेन थी आपकी क्राउड फंडिंग की, तो उसमें पहले हफ्ते में तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपकी वार्म मार्केट से मिलता है. उसके बाद जो दूसरा और तीसरा हफ्ता होता है वो आपका थोड़ा स्लो होता है, ये कर्व नीचे की तरफ जाता है. लेकिन आखिरी जो हफ्ता होता है उसमें ये कर्व ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि वो लोग जो ऑलरेडी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं वो आपके प्रोजेक्ट को उस वक्त तक स्टडी करते हैं और वो देखते हैं कि आया ये प्रोजेक्ट जो है कामयाब हो सकता है कि नहीं. और अगर वो ये फील करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कामयाब हो सकता है, तो वो जंप इन करते हैं और आपके प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, प्लेज करते हैं अपने पैसों को, और इस तरह आपकी जो है एक कामयाब क्राउड फंडिंग कैंपेन कंप्लीट होती है. Yes. So if you can get to 60 or 70% going into your last week, that's when other Leo Crowd users and other people will look at the campaign and will pledge to help you get over the line. Okay. ये जो है आखिरी जो वीक की हम बात कर रहे हैं उसमें तकरीबन 60% जो है वो लोग जो है वो प्लेज करते हैं. और ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है और हमारे जो क्राउड फंडिंग के ऊपर जो हमारे मेंबर्स बैठे हैं वो उसको स्टडी करके वहां पे उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं. Yes. Okay, next slide. Okay, I call this the reality check. Okay, now let me stress, this is not Waqas on the beach in Dubai. Right.
So 65% of all crowdfunding campaigns fail to reach their target. Right. इसमें जो चीज बहुत ही क्लियर, जो जैसे बोलते हैं ना कि एक रियलिटी चेक जो सच है वो आज का वो ये है कि 65%, 65% से ज्यादा जो क्राउड फंडिंग कैंपेन्स हैं वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती. Yes. So it's important to realize that this is not a free handout of money. You don't just put your project on a platform and like this man go to the beach. It requires work, education, action and passion. True. क्राउड फंडिंग जो है वो एक चीज समझने की है. आज की अगर हम प्रेजेंटेशन में ये चीज समझ के उठें कि क्राउड फंडिंग जो है वो ऐसा नहीं है कोई फ्री में बिला वजह में कुछ बगैर सोचे समझे आपको जो है वो पैसे आपके हाथ में पकड़ा देगा. ऐसा नहीं होता. और जो है वो आप जो है वो बैठे जो है वो बकौल डेविड के कि ये मैं नहीं हूँ जो दुबई बीच के ऊपर बैठा हुआ पीना कोलाडा पी रहा है. नहीं, कोई भी आम आदमी जो इस तरह कर सकता है. अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है तो उसके लिए जो 3 चीजें हैं वो बहुत जरूरी है. नंबर 1, राइट एजुकेशन. आपके पास इसकी राइट नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास उसकी सही एजुकेशन होनी चाहिए. नंबर 2, एक भरपूर एक्शन कि आपने उसके लिए मेहनत पूरे तरीके से की हो. नंबर 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो पैशन कितना है आपके अंदर अपने प्रोजेक्ट को लेके. आप कितने पैशनेट हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, कितने एक्साइटेड हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, उसके लिए किस हद तक मेहनत कर सकते हैं. ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं. एंड में जो लाइन है मैं उसको कंप्लीट कर देता हूं. अल्टीमेटली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर. एंड ऑफ द डे आप कभी भी अपने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैंने तो जी बड़ा जबरदस्त काम किया था लेकिन जो हमारा प्लेटफॉर्म था वही थका हुआ था. अगर वो थका हुआ था तो उसने बाकी प्रोजेक्ट्स को कैसे सक्सेसफुल फंड कर दिया. डेफिनेटली आपकी कोई मिस्टेक थी, आपकी कोई गलती थी जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सका. आपको वो मिस्टेक सोचने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है. यस डेविड. Okay, that's fine. We'll go on the next slide. So coming to the end, only a few more slides to go. If you analyze Kickstarter, I'm talking to Leo members here, so I'm trying to get you to understand why Leo Crowd has such a great future. If you look at the first couple of years of Kickstarter, you'll see that the orange pillar of projects that were funded and the blue pillar of projects not funded were very similar, very equal in 09, 010, 011, 012, 013. अगर आप यहाँ पे देखें ये एक बड़ा खूबसूरत चीज इन्होंने ये आखिरी चंद एक स्लाइड्स हैं जो हम देखेंगे और इनमें जो चीज गौर करने वाली है, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वो अगर इसको गौर से देखें कि आप देखें अगर किक स्टार्टर जो दुनिया की बहुत बड़ा जो है वो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है उसकी अगर आप मिसाल लें तो जब वो शुरू हुआ तो उसमें जो ये ऑरेंज बार जो है वो उन प्रोजेक्ट्स की है जो फंड हुए और ब्लू बार जो है वो उन प्रोजेक्ट्स की है जो फंड नहीं हो सके. और अगर आप इसको एवरेज आउट करें मतलब 2009, 10, 11, 12, 13 तक तो इनकी तादाद आपको तकरीबन आगे पीछे ही है. 19-20 का फर्क मिलेगा. 50-60% के रेशो से ये चल रहा है. लेकिन yes David, next. Yeah, so it's almost 1 for 1. One successful, one failed. But if you then go to 14 and 15, you'll see it becomes for every 1 successful, there's 2 not successful. True. तो और लेकिन अगर आप वहां पे अगर आप 2014 और 15 में जाके देखें तो एक तो वहां पे जो 2 चीजें देखने वाली हैं. एक चीज मैं ऐड करूं, एक तो जो प्रोजेक्ट्स की तादाद है वो कहीं ज्यादा है, नंबर 1. और नंबर 2, जहां पे एक प्रोजेक्ट कामयाब हो रहा है वहां पे 2 प्रोजेक्ट नाकाम हो रहे हैं, यानी कि डबल का डिफरेंस आ गया. यस डेविड. And the reason is people are hearing about crowdfunding being a successful way of getting finance, and they're jumping in, but they don't really know what they're doing. They're not preparing campaigns properly, so they're failing to reach their target. Yes. 2014 और 15 में जब ये ट्रेंड बहुत ज्यादा हुआ तो लोगों ने बगैर सोचे समझे यहाँ पे जंप करना शुरू किया, आना शुरू कर दिया. ये सोचते थे कि अगर वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो किसी भी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैसा कि हम पीछे स्टडी कर चुके हैं
कि इसके लिए बहुत सारी मेहनत और बहुत सारी स्टडी और बहुत सारी प्रिपरेशन की जरूरत होती है, और लोग बगैर प्रिपरेशन के लिए के जो है वो प्रोजेक्ट को मार्केट करते हैं, उसके ऊपर प्लान करते हैं, और यही वजह है कि ज्यादातर प्रोजेक्ट, क्योंकि ट्रेंड था, लोग जंप इन करना शुरू हुए, ज्यादा प्रोजेक्ट जो नाकाम हुए और कम प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हुए. यस डेविड. Okay, so this is very, very important because of what Leo Crowd is doing with consultancy services. So we offer a service to project creators to help them prepare and launch their campaign. Because so many are being unsuccessful, we want you to be successful. So we have a consultancy service where we will help you so that you're one of the successful ones and not unsuccessful. True. लियो क्राउड फंडिंग के कंपनी का जो एक सबसे अहम चीज है, जो मैं कहूंगा विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर इन आवर लियो क्राउड फंडिंग, दिस इज इट्स द कंसल्टेंसी सर्विस. कि हमारी कंपनी की जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो सबसे एक खूबसूरत चीज है कि जिसमें हम अपने आने वाले लोगों को जो अपने प्रोजेक्ट लेके, अपने आइडियाज लेके हमारे पास आते हैं अपने आप को प्लेस करवाने के लिए, उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है और वो तमाम चीजें पहले से बताता है जिनकी वजह से वो कामयाब हो सकते हैं या जिनकी वजह से वो नाकाम हो सकते हैं. उनको प्रिपेयर करता है उनके प्रोजेक्ट को मार्केट करने से पहले. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यस डेविड. Okay, so if we go to the next slide, we recently ran like a trial period of a consultancy service, and Leo members could sell this as a product to people outside Leo who wanted to do crowdfunding. Okay, हम लोगों ने अभी जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी की है जिसमें हमने मेंबर्स को ये फैसिलिटी दी कि वो इस पैकेज की सूरत में इसको सेल कर सकें और उससे वो भी फायदा उठाएं, और जो है वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो लोग अपने लेकर आए और उनको सर्विस, कंसल्टेंसी सर्विस भी मिले. यस डेविड, कैन यू एक्सप्लेन इट लिटिल बिट मोर? Yes, indeed. So every project creator has access to, you can see the free training suite where they can learn about crowdfunding. That's free of charge. And the platform, Leo Crowd, takes 5% if the project is successful. That's the platform fee. Okay, पहला जो हमारे पास स्विच है वो हम सर्विस देते हैं वो है फ्री ट्रेनिंग. किसी भी एंटरप्रेन्योर को जो अपनी सर्विस लेके आता है वहां पे हम उसको फ्री ट्रेनिंग देते हैं और उसकी जो सक्सेस फी है 5% है कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं. अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका जो आपकी जितनी आपको फंडिंग मिली है उसका 5% जो है वो लियो क्राउड को मिलेगा. नेक्स्ट. Okay, so but there are a lot of people are unsure on their own, so they want some advice, they want someone to talk to. So if they pay £147, then they can have 2 one-hour sessions face to face or over Skype where they can discuss their campaign, how to build tribes, how to do the video, how to do the pitch, the pre. So basically discuss their campaign and receive advice on their campaign. Okay. दूसरा जो हमारा पैकेज है उसमें हम जो है वो £147 की एक कंसल्टेंसी हम सर्विस देते हैं, और ये जो है प्रोजेक्ट टारगेट कर रहा होता है तकरीबन £1,000 से लेके £5,000 तक का प्रोजेक्ट होता है ये. और इसमें जो हम सर्विस देते हैं वो होती है 2 घंटे का, 1-1 घंटे के 2 सेशन जो कि फेस टू फेस भी हो सकते हैं, स्काइप पे भी हो सकते हैं, फोन के भी हो सकते हैं. और उन सेशंस के अंदर उनको हम ये समझाते हैं और सिखाते हैं कि उनकी कैंपेन कैसी होनी चाहिए, उसकी पिच उन्हें कैसे बिल्ड करनी है, उसकी वीडियो कैसे बनानी है, और ट्राइब जो आपको अपना वार्म सर्कल है वो कैसे बिल्ड करना है. तो इन तमाम चीजों के ऊपर हम टिप्स देते हैं. नेक्स्ट. And we can do translation with people in different markets. So we have that ability to translate. Yeah. और इसके साथ साथ जो है इन तमाम चीजों के अंदर जब ये सेशन हो रहा होता है तो ट्रांसलेशन की फैसिलिटी मौजूद होती है. लेट्स सपोज ये इस वजह से मेरे ख्याल से डेविड ने बोला कि एनीबडी हु इज फ्रॉम पाकिस्तान और इंडिया और यूएई, एनीवन वांट्स टू अवेल दिस फैसिलिटी, तो वो इससे परेशान नहीं हो कि यार मुझे तो लैंग्वेज नहीं बोलनी आती तो मैं कैसे ये ले सकता हूं. तो अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, आपको फैसिलिटी मौजूद है कि आपके लिए वहां पे ट्रांसलेटर पहले से मौजूद होगा जो आपके लिए ट्रांसलेशन कर रहा होगा. यस डेविड. Okay, and then the premium support is £1,397
paid over 3 months. So it's £465 a month for 3 months. And for this, we actually work with the project creator to build the campaign. So we will actually help them write the campaign. We will actually help them produce their video, help them build their tribe. So we almost become a campaign partner for £1,387. Wow. ये प्रीमियम सपोर्ट पैकेज एक डिजाइन हुआ है जो कि प्रोजेक्ट्स की जो वैल्यू है 5,000 से लेके 1 लाख तक पाउंड की हो सकती है, और इसके अंदर जो है वो पर्सनल कैंपेन मैनेजर के तौर पे हम काम करते हैं, और इसकी जो फी है, जो पैकेज प्राइस है, वो 1,397 पाउंड उसकी प्राइस है, जो कि 3 महीनों में पेएबल है पर मंथ 465 पाउंड 465 पाउंड पर मंथ के हिसाब से। और इसके अंदर जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो है 2 घंटे पर वीक फॉर 3 महीने के लिए, यानी कि 2 आवर्स पर वीक फॉर 3 मंथ्स आपको ये सर्विस मौजूद रहेगी। और इसके अंदर जो है वो लियो क्राउड के जो कंसल्टेंट हैं वो आपके साथ एज अ पार्टनर काम कर रहे होंगे, एज अ पर्सनल कैंपेन मैनेजर के आपके साथ काम कर रहे होंगे, जिसके अंदर ये तमाम सर्विसेज कि आपकी प्रोजेक्ट की कैंपेन की डिटेल कैंपेन डिजाइन करना, आपकी पिच बनाना, आपकी वीडियो प्रोड्यूस करना, आपको हेल्प करना अपना ट्राइब क्रिएट करने के लिए जो आपकी वार्म मार्केट है, उसके बाद आपका इनपुट रिगार्डिंग प्री लॉन्च, ड्यूरिंग एंड पोस्ट कैंपेन, ये तमाम चीजें जो है आपके साथ वो फॉलो कर रहे होंगे टू मेक योर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। So it's an extraordinary service, I believe, which David, you guys are providing. I know a lot of people who definitely go for that, and there are a lot of people who don't know how to pitch that. I really congratulate you coming out